Go ahead. So let's start with the third workshop for the event I-Chip. In the first two workshops, we had already covered a good deal of theoretical concepts. The remaining concepts will be covered in this workshop, and we will also discuss some problem statements based on what we have discussed so far. So let's have a quick recall of what we have discussed so far. In the first workshop, we started with the discussion of the modeling styles present in Verilog. So we have three types of modeling: gate level, data flow, and behavioral. So in gate level, we describe the given circuit using the various gates present in the circuit. The keyword which we use in our Verilog design module is the gate name itself. So Verilog provides us with many such gates. We just need to instantiate them in our module. In data flow module modeling, we use the keyword assign and then the logical or the Boolean expression whose value we want to assign to the target output. So the first two modeling styles are basically used for combinational circuit and uses the assignment operation known as continuous assignment. Whereas the third one, that is behavioral modeling, uh, is basically used for the sequential circuit and uses procedural assignment. So we have already discussed an example of a 2 to 4 line decoder. First we implemented it using gate level modeling. Then we implemented it using data flow modeling. So the keywords in the gate level modeling are the gate name itself, and in the case of data flow, we use the assign keyword. The basic syntax remains the same in every modeling style. That is, every statement terminates with a semicolon. The module start with the keyword module, which also terminates with a keyword and module. We don't use any semicolon at the end of the keyword and module. And we have discussed that behavioral modeling basically describes a circuit at a functional level. The keyword which we use in the case of behavioral is always. So we have already discussed about the event control operator, that is denoted using the @ symbol, and the event control expression. So the event control expression specifies the condition that must occur to launch the execution of procedural assignment statements. So notice that in the case of behavioral, we will be using procedural assignment, whereas in the case of the other two modeling styles, we use continuous assignment. So the statements within the block will execute sequentially from top to bottom. After the last statement executes, the behavior will wait for the event control expression to be satisfied once again. So whenever the expression within the event control expression is satisfied, the procedural assignment statements will be executed that are included in the always block. Then we have discussed the two types of behaviors in the second workshop, namely the single pass behavior and cyclic behavior. So as the name suggests, a single pass behavior expires after the associated statement executes. That is, it will execute only once. And the keyword we use is initial. And for cyclic behavior, it executes infinitely whenever the specified conditions are met, and for it we will be using the keyword always. It's basically a quick recap of the contents we have already discussed. So then we have discussed how to implement a simple clock using a single pass and a cyclic behavior respectively. Then we have also discussed about the two variables that two keywords that Verilog provides, namely positive edge and negative edge, because the changes in flip-flop occur only in response to a transition of a clock pulse. So these two variables are very frequently used. Then, as I said, in the case of behavioral modeling, we will be using procedural assignment. So the assignment statements are of two types, continuous and procedural. And procedural assignment is further of two types, namely blocking and non-blocking. So in the case of blocking assignment, the statements are executed sequentially in the order they are listed in the block of statements. Whereas in the case of non-blocking,
all the various assignment statements that are present in the given block will be executed concurrently. That's the basic difference between the two. And note the symbol that we use in the case of blocking assignment is a single equal to operator, and the symbol used in the case of non-blocking assignment is a less than sign followed by a equal to sign. Then in the second workshop, we have a brief discussion on a d-flip-flop, its design module and its test bench and the resulting simulation. So we have also discussed the first practice problem in which we implemented a sequence detector of 1011. So that's the very essence of behavioral modeling. You basically don't needed the circuit. Here we have just drawn the state diagram, and on the basis of this given state diagram, we have built up the design module and the simulation module. That's why we describe the behavioral modeling, that it describes a given circuit at a functional level. All it needs is a function that is to be done by the provided circuit. So we did not mention the Boolean expression or the gates present in the circuit. We just represent the functions that are being done by the circuit. So that's the beauty of behavioral modeling. Just draw the state diagram and implement it. So we have already discussed the Verilog code for sequence detector in the previous workshop. Now let's move on to a fresh practice problem. So the problem statement states that given a sequence, we have to find the remainder when the given sequence is divided by 3. So the given sequence is a binary string. We have to find its corresponding decimal value, and the output will be the remainder, which is obtained when the corresponding decimal value is divided by 3. So if at the first state is an unknown state, so it's empty, the input bit is 0. So the new sequence that is obtained after the input bit is added to the current sequence is a simple 0. So when 0 is divided by 3, the remainder is 0. Similarly, the various current sequence, the input bit, the resulting new sequence and the remainder are given. So let's move on to the explanation. So any real number can be represented in the form of 3q plus r. So basically the output of our code will be the value of this r, that is the remainder, which will be obtained when the given number n is divided by 3. So now let the current number be n. Now whenever a new bit comes to the number, the resultant number is twice of the current value added the bit value which was the current input. So for example, you can verify it with a simple example. Consider that the current sequence was 10. It is a binary string, so its corresponding decimal value will be 2. Now the input bit is suppose 1, so the new sequence will be 10 concatenated with the new bit, that is 1. So 101. Corresponding decimal value is 5. So you can see that 2 is twice of the initial value added to the new bit value. So whenever a new bit comes, the resultant number is twice of the current number plus the new bit. So m then can be represented as 6q plus 2r plus b. So the resultant remainder r1 will be twice of the previous remainder plus the input bit whole modulo 3. The r here represent the old remainder, that is the last sequence remainder when it was divided by 3. So let's move on. So initially we have n equal to 0, or that given state machine is an unknown state. So we represent it by the value 0. Now when n is 0, the corresponding remainder will be 0 when it is divided by the value 3. Hence r1, which was 2r plus b modulo 3, will get reduced to b modulo 3, where b is the input bit. So when the FSM is an unknown state and the input b is 0,
then the final remainder will be 0, and if the corresponding input is 1, then the final remainder will be 1. Now similarly, if the number n was of the form 3q plus 0, that is the old remainder, the old value of the remainder obtained was 0, and for it if we get a new bit value as 0, then the corresponding remainder r1 will be 0, and if we get a bit value b equal to 1, corresponding r1 will be 1. Similarly, if the number was of the form 3q plus 1, that is the old remainder was 1. So if the new input is 0, then the final remainder will be 2, and if the new bit input is equal to 1, the remainder will be 0. Similarly, for any number of the form 3q plus 2. So we can see here that the states of the state of the finite state machine at any given time is basically decided by the remainder of the previous sequence of the previous number. For example, if previously the remainder was equal to 0, then if the new bit is equal to 0, the remainder will be again equal to 0, and if the new bit is equal to 1, the remainder will be equal to 1. Similarly, if the old remainder value was equal to 1, now if the new bit value is 0, the remainder will be equal to 2, whereas if the bit value is 1, the remainder will be equal to 0. So the various states can be represented as shown in the state diagram. So there are 4 states, namely the unknown state, that is the first state which is declared as an unknown state, represented using a 1 1. Then S0 corresponding to the remainder 0, S1 corresponding to remainder 1, S2 corresponding to remainder 2. So here we have 4 states. Now it is the state transition table. So when the current we are at the unknown state, if the input bit is 0, the next state will be S0 and the output will be 100. So the output is of the form of 3 LEDs, say A, B and C. A represents the remainder value equal to 0, B the remainder value equal to 1, C the remainder value equal to 2. So when the remainder value is equal to 1 is equal to 0, then the first LED should glow up. It's in the problem statement. So when the remainder is equal to 0, the first LED should glow up. So the first bit of the output should be high, that is equal to 1. And the other 2 LEDs representing the remainder as 1 and 2 respectively are set to low. So they have a value 0. Similarly, if the remainder is equal to 2, then the third LED, that is 0, 1, 2. So the value of the third bit in the output should be high, that is 1, and the first 2 bit should be 0. I hope so you are able to get my point. So the entire states are just a function of the previous remainder and the new input bit. So if the previous state was unknown state and the input bit is 0, the next state will be S0, and if the input bit is 1, the next state will be S1. Now if the current state was S0 and the input bit is 0, the next state will be S0, and if the input bit is 1, the next state will be S1. Similarly, we have for the current states S1 and S2. So it is in the state diagram. Now what we need to do after drawing the state diagram is we just need to implement it in the Verilog module. So first, the most important part is to draw the state diagram correctly and understand the reason why we have how the 4 states S0, S1, S2 and S3 were determined, what they represent. S0 simply represents that the current remainder value is 0. S1 represents the current remainder value was 1. S2 represents the current remainder value was 2. And S3 simply represents the unknown state when the given circuit will start working. And the corresponding output is just a function of the previous remainder and the corresponding input bit. So the state diagram is just a function of the previous remainder and the present input. So this is the Verilog design module for the given circuit.
First of all, we use the keyword module followed by the module name and then the port list. Then we mention the output ports. We declare it using a vector. Note that since we are using behavioral modeling, so all the output identifiers are also to be declared as register type. Then we declare the two inputs, that is B and the clock, followed by a register, which is used to hold the present state of the circuit. So initially we declared the state as the unknown state, that is 1 1, S3, which represents the unknown state whose binary value is 1 1. So then we use a cyclic behavior using the keyword always. So whenever we face a positive edge of clock transition, the statements following the always block will be executed. So whenever there is a positive edge, the case statement will be executed. So case of S, it means that for the given value of the state S, the whichever statement value matches, the executed. Then let's see the test bench. We first of all use the keyword module to declare the test bench. Then we declare all the wires and register. Then we instantiate the design module. Then we had used a initial block and a all. We have used two initial block and an always block. Remember that all these three blocks will be executed concurrently and they all will start operating at the time t equal to 0 nanoseconds. So let's discuss about the first initial block. At t equal to 0, the clock will be assigned a value 0. Then and the input bit I will be assigned a value equal to 0. Then after every 10 seconds, the value of I will change according to the value that we have passed. So moving on to the next block, that is an always block. So always no conditions are there, so it will run infinitely at an interval of every 5 seconds. And what it does is that it simply implements a clock which has a time period of 10 nanoseconds, and at every 5 nanoseconds the value is complemented. And then the third initial block which waits for 70 seconds and then finish. So it terminates the execution. So let's see the corresponding simulation result. So at t, let's start with clock first. So at t equal to 0, the value of clock is 0, and at every 5 nanoseconds, the value of clock will be complemented, and the simulation terminates at t equal to 70 nanoseconds. Then we have the second line which represents the input. So it's according to the values that we have passed in the test bench or the simulation module. And then we have the output. So as I have already said that the output here is a 3-bit output which we have represented using a vector 0 1 2. The 0th bit represents the remainder equal to 0. The second bit represents the remainder equal to 1, and the last bit remainder value equal to 2. So now let's see the code and the simulation. So whenever we encounter a positive edge of the clock, the statements will be executed. So the first positive edge of the clock will be occurring at t equal to 5 nanoseconds. So at t equal to 5 nanoseconds, the value of input I is equal to 0, and the present state is an unknown state which we represent using the S3, that is 1 1. So in the case block, refer to the very last statement. It represents the state S3, that is the unknown state or the starting state of our circuit. So we start with the unknown state, and we have seen in the simulation diagram that the corresponding input at t equal to 5 nanosecond was 0. So the current state is S3 and the corresponding input was 0. So the next state will be S3 will be 0 0, that is
as 0 and the corresponding output will be 1 0 0. So let's see the simulation diagram. So as you can see here, at t equal to 5 nanoseconds, the corresponding output is 100. So that should be the result when at t equal to 5 nanosecond. Now the value will next change at t equal to 10 nanoseconds, and it will similarly move on. At every positive edge of the clock, the value will change according to our Verilog design module. So any doubts so far? Anand, you may continue. Okay, so I guess the slides are visible and audio is also fine. So अभी तक हमने देखा है कि किसी भी सर्किट को स्टेट डायग्राम की हेल्प से कैसे उसका कोड लिख सकते हैं। अगर कुछ भी अच्छा क्वेश्चन है तो सबसे पहली स्टेप होती है कि उसका जो लॉजिक है वो देखते हैं। जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में हमने देखा है कि मॉड 3 निकालना था, तो पहले स्टेट डायग्राम बनाया है उसका लॉजिक ढूंढ के, और जैसे स्टेट डायग्राम बन जाता है तो काफ़ी फिर इजीली कोड लिख सकते हैं। अब बस ये लास्ट टॉपिक बचा है, स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लॉक्ड सीक्वेंशियल सर्किट्स। सो अभी तक हमने देखा है कि सीक्वेंशियल सर्किट को स्टेट डायग्राम की हेल्प से उसका वेरिलॉग कोड लिखा था। अब बस अगर अपने पास सर्किट है तो उसका स्ट्रक्चर के हेल्प से उसका वेरिलॉग कोड लिखना है। तो ये बस इतना ही लिखा है कि अगर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है तो एक अगर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है तो हम उसको किसके कैसे डिस्क्राइब करते हैं, या तो कनेक्शन ऑफ गेट्स मतलब गेट लेवल मॉडलिंग की हेल्प से, या डेटा फ्लो स्टेटमेंट्स, या फिर बिहेवियरल स्टेटमेंट्स जो कि लेवल सेंसिटिव फॉर्म में होते हैं। और लेकिन अगर सीक्वेंशियल सर्किट्स है जो कि कॉम्बिनेशन होते हैं, एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक वाला पार्ट रहता है और फ्लिप फ्लॉप्स रहते हैं इस सर्किट में, तो इसके लिए हम सीक्वेंशियल फ्लिप फ्लॉप्स यूज करते हैं और बिहेवियरल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं to describe the operation of flip flops. So structure description देख लेते हैं अपन। So basic simple सा काउंटर का प्रॉब्लम ले लेते हैं। So काउंटर में क्या होता है, ये 2 बिट काउंटर है, 2 बिट बाइनरी काउंटर है। सो काउंटर हर क्लॉक पे जो स्टेट होती है वो +1 होती जाती है। जैसे इनिशियल स्टेट 0 है तो पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक जब आती है तो नेक्स्ट स्टेट 0 1 और फिर 1 0 और 1 1, और उसके बाद हर नेक्स्ट पॉजिटिव क्लॉक पे वापस 3 से 0 पर आ जाती स्टेट। और यहाँ पे बस एक्स्ट्रा एडिशन एक ये है कि एक और इनपुट दे दिया है जो कि अगर 0 होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा स्टेट में, सर्किट की उसी स्टेट में रहेगा, और अगर 1 है इनपुट की वैल्यू तो जो स्टेट है वो इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगी। तो इसका स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन से वेरिलॉग कोड कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। पहले देख लेते हैं कि स्टेट डायग्राम की हेल्प से कितने इजीली ये लिख सकते हैं। तो जैसे कि लास्ट वर्कशॉप में भी देखा, अभी भी इस क्वेश्चन में देखा, तो बस ये वही चीज़ है, तो ज़्यादा डीप में नहीं देखेंगे। कि 4 स्टेट्स दिख रही है, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो एक रजिस्टर वेरिएबल स्टेट डिफाइन कर दिया है और एक ऑलवेज ब्लॉक लिख दिया है। अगर रीसेट 0 हुआ तो स्टेट को 0 कंडीशन में भेज देंगे, नहीं तो जब भी इनपुट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट में ट्रांसफर कर देंगे +1 करके, नहीं तो उसी स्टेट में रहेंगे। और ये सिंपली पूरा सर्किट जो भी रहेगा इस काउंटर का, वो सिर्फ इस कोड से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके आउटपुट भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। आउटपुट क्या होगा, जब भी अगर काउंटर 3 पर रीच कर गया है 0 1 2 3, तो आउटपुट 1 हो जाना चाहिए कि एक साइकिल पूरी हो चुकी है। तो ये स्टेटमेंट लिख दिया, असाइन वाई आउट इक्वल टू स्टेट इक्वल टू S3। मीन्स अगर स्टेट S3 है, मीन्स 1 1 स्टेट है, तो वाई आउटपुट जो वेरिएबल है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि अगर इस सर्किट का स्टेट डायग्राम हमें पता नहीं होता, या फिर इसका स्ट्रक्चर जो सर्किट का डिजाइन है उसका यूज करके अगर कोड लिखना होता तो वो कैसे लिखते हैं। तो ये राइट में बाइनरी काउंटर का स्टेट डायग्राम है और लेफ्ट में इसका सर्किट है।
तो ये सर्किट तुम कैसे डिजाइन करोगे? वही सब जो भी डिजाइनिंग प्रोसेस होती है, स्टेट डायग्राम, स्टेट टेबल की हेल्प से, और फ्लिप फ्लॉप्स की कैरेक्टर इक्वेशन, एक्साइटेशन इक्वेशंस, उनका यूज करके ये पूरा सर्किट डिजाइन करोगे। तो अब एक चीज तुम ये देख सकते हो कि जब भी किसी सीक्वेंशियल सर्किट को बनाते हो तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट जो है वो फ्लिप 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 फ्लॉप्स का रहता है, जैसे यहाँ पे दो टी फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं, ए और बी। और जो दूसरा पार्ट है वो कॉम्बिनेशनल पार्ट है। तो एक कॉम्बिनेशनल पार्ट ये है कि जैसे कि हर नेक्स्ट स्टेट फंक्शन होती है प्रेजेंट स्टेट और इनपुट्स का। तो ये नेक्स्ट स्टेट जो होगी वो फंक्शन ऑफ प्रेजेंट स्टेट्स और इनपुट्स होगी। तो ये एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक है। तो इस जैसे कि यहाँ से देख सकते हो तुम कि जो ए फ्लिप फ्लॉप है इसकी नेक्स्ट स्टेट डिस्क्राइब कैसे होगी, इनपुट एक्स पे डिपेंड कर रही है, और प्रेजेंट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स जो है ए और बी उन पे डिपेंड कर रही है। तो और इसी तरह आउटपुट, ये भी ये एक मूर मशीन है तो सिर्फ प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड कर रही है। तो इसको भी कॉम्बिनेशनल लॉजिक से डिफाइन कर सकते हैं। तो जब भी किसी भी सर्किट का स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन अपन वेरिलॉग कोड से करते हैं तो बेसिकली दो पार्ट्स में करते हैं। एक जो फ्लिप फ्लॉप्स वाला पार्ट है, बिहेवियरल पार्ट कह देते हैं उसको, और एक जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक वाला पार्ट है जिसमें असाइन स्टेटमेंट्स यूज होंगे। तो उसका कोड कैसे लिखते हैं देख लेते हैं। सर्किट एक बार देख लो, ये दो फ्लिप फ्लॉप्स है, और बाकी जो कॉम्बिनेशनल वाला पार्ट है वो भी दिख रहा है। सो ये डिजाइन मॉड्यूल है बाइनरी काउंटर का। तो इसमें आउटपुट है वाई आउट, इसको आउटपुट बोला है। ये वन होगा जब काउंटर की स्टेट होगी वन वन। इनपुट, और इनपुट है यहाँ पर एक्स इन, क्लॉक और रीसेट। और ए और बी को भी आउटपुट डेजिग्नेट कर दिया ताकि टाइमिंग डायग्राम में इसके ट्रांजिशन अपने दिखते रहे। ए और बी स्टेट्स है फ्लिप फ्लॉप्स की। ठीक है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स टी ए और टी बी डिफाइन करे हैं, इन्हें वायर डिफाइन किया है। तो ये क्या होंगे, ये नेक्स्ट स्टेट डिस्क्राइब करेंगे जो दोनों फ्लिप फ्लॉप से ए और बी। तो जैसा मैंने अभी कहा कि नेक्स्ट स्टेट है वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक से डिस्क्राइब कर सकते हो। तो यहाँ पर टी ए को कॉम्बिनेशनली डिस्क्राइब किया है, असाइन टी ए इक्वल टू एक्स इन एंड बी। जैसा कि यहाँ पर था कि ये जो टी ए है ये एंड है एक्स का जो इनपुट था, और जो प्रेजेंट स्टेट थी यहाँ से आ रहा है बी। तो जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है और जो इनपुट है इसका यूज करके तुम नेक्स्ट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स निकाल लोगे डेटा फ्लो मॉडलिंग का यूज करके। तो टी ए और टी बी ये दोनों इक्वेशंस इसके लिए। और सिमिलरली असाइन वाई आउट इक्वल टू ए एंड बी, ये सिंपली आउटपुट है जो प्रेजेंट स्टेट के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू लेगा। तो जब भी ए और बी दोनों वन है तो वाई आउट वन होगा, मीन्स स्टेट वन वन है। तो आउटपुट और नेक्स्ट स्टेट कॉम्बिनेशनल इक्वेशंस की हेल्प से हमने लिख दिया है। और जो दूसरा पार्ट होता है वो फ्लिप फ्लॉप्स, जो बिहेवियरल मॉडलिंग यूज जिसमें होती है। तो अब इसके लिए एक नेक्स्ट मॉड्यूल में टी फ्लिप फ्लॉप्स का जो फंक्शन है वो डिस्क्राइब कर दिया है। यहाँ पर भी कर सकते थे पर यूजुअली अगर सर्किट्स बड़े रहते हैं तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक कॉम्बिनेशनल और एक ये जो है बिहेवियरल पार्ट जो है। तो इसलिए बिहेवियरल पार्ट जो है वो एक नेक्स्ट मॉड्यूल में लिखते हैं यूजुअली। तो इसलिए ये हायरार्चिकल मॉडल बना हुआ है। तो सिंपली यहाँ पर एक एक और मॉड्यूल लिख दिया है टॉगल फ्लिप फ्लॉप, जो कि टी फ्लिप फ्लॉप के फंक्शन को डिस्क्राइब करेगा। तो इसमें कुछ नया नहीं है। जो भी इनपुट टी है उसके बेसिस पे फ्लिप फ्लॉप की जो स्टेट है वो चेंज होगी। अगर टी वन हुआ तो जो प्रेजेंट स्टेट है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, नहीं तो सेम रहेगी। और अगर रीसेट जीरो था तो इरिस्पेक्टिवली ऑफ द इनपुट फ्लिप फ्लॉप की स्टेट जीरो हो जाएगी। तो ये एक मॉड्यूल है, अब इसको मेन मॉड्यूल में इंस्टेंशिएट कर दिया है। तो इसकी हेल्प से जो फ्लिप फ्लॉप से अपने पास ए और बी, इनकी स्टेट, इनका जो आउटपुट है, जो प्रेजेंट स्टेट है, वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरह से किसी भी सिक्वेंशियल सर्किट को उसके स्ट्रक्चर को देख के कोड लिख देते हैं। उसका कॉम्बिनेशनल वाला पार्ट पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसको एक मॉड्यूल में लिख देते हैं। और जो उसका फ्लिप फ्लॉप्स की जो है जो स्टेट कैसे चेंज हो रही है, वो जो बिहेवियरल पार्ट है वो एक नेक्स्ट मॉड्यूल में लिख देते हैं, और इंस्टेंशिएट कर सकते हैं या एक मॉड्यूल में भी लिख सकते हो। तो इस प्रकार सिंपली जैसा कि जो भी स्ट्रक्चर है बस उसको देखकर पूरा कोड लिखना रहता है। इसमें तुम देख सकते हो कि स्टेट्स वगैरह वो सब यूज नहीं हुआ है, जो कि काफी सिंपलर रहता है स्टेट डायग्राम की हेल्प से।
जैसा कि अपने अभी इस स्लाइड में देखा है कि सिर्फ इतना सा कोड रहता है, सिर्फ एक ऑलवेज ब्लॉक में पूरे सर्किट को डिस्क्राइब कर सकते हो। बाकी अगर स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन यूज कर रहा है तो स्ट्रक्चर को देखकर अगर कोड लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हो, कॉम्बिनेशनल पार्ट और उसका जो बिहेवियरल पार्ट है वो दोनों देखकर, और उनको अलग अलग मॉड्यूल में लिख के और उस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो। फिर यहाँ इसकी टेस्ट बेंच है। तो टेस्ट बेंच में नया देखने का कुछ नहीं है, जैसा जो भी अपने अभी तक हर एग्जांपल में देखा है सेम वैसी टेस्ट बेंच है। मेन डिजाइन मॉड्यूल को इंस्टेंशिएट करा है, सारे इनपुट्स को वैल्यू दी है इनिशियल ब्लॉक के अंदर, शुरू में रीसेट जीरो कर दिया है ताकि स्टेट फिक्स फिक्स स्टेट में आ जाए फ्लिप फ्लॉप्स। और फिर क्लॉक पल्स जनरेट कर दी है और इनपुट दे दिया है। तो इसका टाइमिंग एनालिसिस देख लेते हैं। तो ये एक बाइनरी काउंटर था, तो स्टेट्स 000110110001 इस तरीके से ट्रांजिशन लेना चाहिए। मीन्स हर पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक पे +1 से इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पर ए और बी भी आउटपुट हमने डिफाइन किया था, इसलिए टाइमिंग डायग्राम में दिख रहा है। तो जब भी पॉजिटिव एज आती है क्लॉक की, और अगर इनपुट जो कि t_x_इन से यहाँ पे डिफाइन है, वो अगर 1 है, मीन्स काउंटर की स्टेट है उसको इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पर हो रहा है, पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक है, इनपुट 1 है। तो तुम देख सकते हो कि जो बी है, सेकेंड फ्लिप फ्लॉप, वो 1 हो गई उसकी वैल्यू, और ए की 0 रही है, मीन्स काउंटर 0 0 से 0 1 पे आ गया। फिर नेक्स्ट देख सकते हो तुम 0 1 से 1 0 पे आ चुका है, ए 1 हो चुका है, बी 0। और फिर जब वापस पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक आती है और इनपुट 1 रहता है, तो 1 0 से 1 1 पे हो गया, ए भी 1 है और बी भी 1 है। और अगर दोनों फ्लिप फ्लॉप्स की स्टेट 1 और 1 है, सो आउटपुट हाई रखना था, इसलिए इस टाइम पीरियड में आउटपुट 1 हो चुका है। तो इस तरीके से पूरा काउंटर को हमने डिस्क्राइब कर दिया है स्ट्रक्चर को देख के। कोई डाउट हो तो लिख सकते हो चैट बॉक्स में। ठीक है, तो बस इतना ही था। सीक्वेंशियल सर्किट्स को हमने देख लिया पिछली वर्कशॉप और इस वर्कशॉप में। अगर कोई भी सीक्वेंशियल सर्किट है, सबसे पहले उसका लॉजिक देखो, उसका स्टेट डायग्राम बनाओ, स्टेट डायग्राम की हेल्प से, बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन की हेल्प से पूरा वेरिलॉग कोड लिख सकते हो, या फिर उसका सर्किट बनाकर उसका स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन की हेल्प से वेरिलॉग कोड लिख सकते हो। सेम टाइमिंग डायग्राम तुम्हें मिलेगा। तो यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है। और दो चीजें और देख लेते हैं, बस एक ग्लांस मार लेते हैं। यूनिवर्स शिफ्ट रजिस्टर तुमने वर्कशॉप्स में देखा होगा अब तक, डिजिसिम की, या पढ़ा होगा। तो इनमें भी कुछ नया नहीं है। रजिस्टर्स और काउंटर्स जो है, इनका कोड भी जितना अपन ने देखा है अब तक वर्कशॉप्स में, मोर और लेस उसी तरीके से कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर एक यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का सर्किट है। इस सर्किट के में बेसिकली 4 ऑपरेशंस है। वो है, अगर इनपुट दे रखा है तो उसको आउटपुट पर ट्रांसफर करना, या फिर सेम आउटपुट रहना, या फिर शिफ्ट राइट ऑपरेशन इंप्लीमेंट करना और शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन इंप्लीमेंट करना। तो शिफ्ट रजिस्टर अगर तुम्हें आता हो तो ही सब समझ आएगा। सो प्री रिक्वेस्ट था। सो अब इसका कोड भी वैसे ही होगा, कुछ नया नहीं है। बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन की हेल्प से कोड लिख लेते हैं, कैसा लिखा आएगा। तो ये एक टॉप लेवल फंक्शन क्या है इस सर्किट का, वो दिखा रहा है ये डायग्राम। तो शिफ्ट रजिस्टर में इनपुट्स क्या है, S1 और S0। ये बेसिकली मक्स के इनपुट्स थे जो डिसाइड करेगा कि कौन सा ऑपरेशन करना है, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, या जो लोड है, इनपुट लोड है, उसे ट्रांसफर करना है आउटपुट में, या फिर सेम कुछ चेंज नहीं करना है। MSB इन और LSB इन बिट्स है अगर शिफ्ट लेफ्ट या शिफ्ट राइट ऑपरेशन करना है, और क्लॉक और क्लियर तो है ही। तो बेसिकली जो भी ऑपरेशंस है उसकी हेल्प से इसका बिहेवियरल डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। तो क्या होगा, आउटपुट A_PAR डिफाइन किया है, जो कि मेन आउटपुट है, ऐसे इनपुट है, और S1 और S0 सिलेक्ट लाइन्स है। MSB और LSB इन शिफ्ट के लिए बिट्स है, और क्लॉक और क्लियर 2 इनपुट और है। तो सिर्फ एक ऑलवेज ब्लॉक लिखेंगे जो इस पूरे सर्किट के बिहेवियर को डिफाइन करेगी, डिस्क्राइब करेगी। अगर क्लियर 0 है, मींस रीसेट कंडीशन, तो जो फ्लिप फ्लॉप की स्टेट है, जो आउटपुट है, वो 0 कर देंगे। और अगर नहीं, तो डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑपरेशन हमें करवाना है शिफ्ट रजिस्टर से। अगर 0 0 होता है S1 और S0, तो कोई चेंज नहीं। अगर 0 1 है S1 और S0, तो लेफ्ट शिफ्ट है ये,
राइट शिफ्ट है, और अगर 1 0 है तो लेफ्ट शिफ्ट है, और ऐसे अगर 1 और 1 होता है तो जो भी आउटपुट है वो बेसिकली जो भी लोड तुमने दिया इनपुट फॉर्म में, वो उसमें आउटपुट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो ये बड़ा सा सर्किट था, अगर इसका स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन करते तो काफी बड़ा होता। हालांकि इस सर्किट का जो बिहेवियर है, जो मेन फंक्शन है, वो हमें पता था, तो उसकी हेल्प से हमने बिहेवियर डिस्क्रिप्शन लिख दिया। तो ये शिफ्ट रजिस्टर का कोड है। इसी तरह से काउंटर्स होते हैं। एक एग्जांपल अभी अपन ने प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, वो भी एक काउंटर था। तो काउंटर्स का कोड भी ऐसे ही होता है। ये एक रिपल काउंटर का कोड है। तो रिपल काउंटर बेसिकली एसिंक्रोनस काउंटर होते हैं। मींस सिंक्रोनस काउंटर्स में क्या होता है, सारे फ्लिप फ्लॉप्स एक ही क्लॉक से ड्रिवन होते हैं। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि हर फ्लिप फ्लॉप्स की क्लॉक अलग है। इस फ्लिप फ्लॉप की जो क्लॉक है वो काउंट वेरिएबल है। इस फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक जो है वो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप्स का आउटपुट है, और बाकी दोनों के लिए भी यही चीज है। तो इसलिए ये रिपल काउंटर है। और इसका कोड भी सिमिलर होगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन से इसका कोड लिख लेते हैं। बिहेवियरल से भी लिख सकते थे, यहाँ पर स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो ये सर्किट है पूरा, इसका स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने है। तो कोड कैसे लिखेंगे, जैसे वैसे ही लिखेंगे जैसा अभी हमने सीखा कि स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं। तो बेसिकली 4 फ्लिप फ्लॉप्स है। तो इसका कोड देख लेते हैं। A3 A2 A1 और A0 ये चारों आउटपुट है जो कि फ्लिप फ्लॉप्स की स्टेट है, और इनपुट काउंट है और रीसेट है। ठीक है। तो बेसिकली चारों फ्लिप फ्लॉप हर क्लॉक की पॉजिटिव एज पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो इन्हें एक अलग मॉड्यूल में डिफाइन कर दिया है, कॉम्प डी फ्लिप फ्लॉप्स। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जब भी रीसेट 0 है तो जो भी क्यू है, मतलब जो भी स्टेट है, वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। और बस यही फंक्शन है इस पूरे काउंटर में। बेसिकली यही होता है कि जो सबसे एलएसबी बिट को डिफाइन जो करता है, वो काउंटर हर स्टेप पर कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहाँ पर तुम देखोगे जब भी क्लॉक की पॉजिटिव एज आती है, जो ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, उसकी स्टेट कॉम्प्लीमेंट होती रहेगी। सेकंड फ्लिप फ्लॉप की स्टेट जब भी कॉम्प्लीमेंट होगी जब जो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप है वो 1 से 0 पे आएगा। क्योंकि इस फ्लिप फ्लॉप की जो क्लॉक है वो A0 से आ रही है, और क्योंकि हमारे सर्किट में नेगेटिव एज ऑफ क्लॉक है, मींस जब भी 1 से 0 हो रही है वैल्यू क्लॉक की, और इस फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक की वैल्यू पिछली फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट कंडीशन है। तो जब भी प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप 1 से 0 आएगा तो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप कॉम्प्लीमेंट होगा। सिमिलरली बाकी दो फ्लिप फ्लॉप्स के लिए भी यही बात है। इस फ्लिप फ्लॉप की स्टेट जब भी कॉम्प्लीमेंट होगी जब A1 1 से 0 होगा, और इस फ्लिप फ्लॉप की स्टेट जब कॉम्प्लीमेंट होगी जब A2 1 से 0 होगा। तो ये स्ट्रक्चर था। तो ऐसे इसीलिए चार पहले एक कॉम्प्लीमेंटिंग डी फ्लिप फ्लॉप मॉड्यूल लिख दिया, और इसको 4 बार इंस्टेंशिएट किया है मेन मॉड्यूल में, जो चारों फ्लिप फ्लॉप्स जो है सर्किट के, उनकी स्टेट का आउटपुट प्रिडिक्ट कर देगा, कैलकुलेट कर लेगा। और जो भी आउटपुट आएगा बस वही काउंटर की प्रेजेंट स्टेट रहेगी। तो बस इस तरीके से काउंटर का स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन है। और ये तो बस टेस्ट बेंच है। ये नीचे वाला जो कोड है जिसमें कुछ नया है नहीं। तो बस ये दो चीजें और तुम्हें दिखाना था, एक रजिस्टर और उसका कोड, और काउंटर और उसका कोड। और बाकी सीक्वेंशियल सर्किट्स को का कोड लिखने के दोनों मेथड्स हमने देख लिए हैं। पहला जो स्टेट डायग्राम की हेल्प से करा था, जो प्रीवियस वर्कशॉप में एक एग्जांपल किया था, और एक आज। और स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन से भी इस सर्किट का कोड लिख सकते हैं, जो हमने आज इस एग्जांपल में देखा। ये 2 बिट काउंटर था, और इसका सर्किट हमारे पास था, टी फ्लिप फ्लॉप्स थे। तो कॉम्बिनेशनल वाला पार्ट अलग, और एक एक मॉड्यूल फ्लिप फ्लॉप्स के लिए, और पूरे सर्किट जो भी है उसको उसको पूरा रेप्लिकेट कर दिया कोड में। तो ये दो मेथड्स थे। बस आज की वर्कशॉप में इतना ही था। किसी को कुछ डाउट्स हो तो पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं तो रैप अप करते हैं।